remaining implementation and all those works till now. So we are going to start with deep learning, and deep learning this with Keras and TensorFlow, but we are going to see with the Python itself only, because TensorFlow and Keras have some different frameworks, we can say. So we are not going to look into these things. They are just for a basic introductory part only. We'll go within a Python implementation only. So what we are going to see in this, we already seen that Python and machine learning are the two things that are important for deep learning concepts. So what we are going to we are going to see first is something regarding ANN, that is artificial neural networks. Then what is deep learning? Then something regarding CNN and all those things, that is this convolutional neural networks. Then RNN, and final will be your, sir let me, कनिका मैम कोई वेट कर रहा है, उनको लेट इन कर लीजिए आप. Then autoencoders. These are the final things. Okay, this was a simple examples. We are going to see project alerts is something PUBG players finishing the placement predictions and all. These things that we are going to see, that is ANN, CNN, RNN, and autoencoders. So we'll start with the proceedings now. Deep learning introduction. So what is artificial intelligence is all about? Artificial intelligence is a branch of computer science that attempts to simulate the human intelligence in machines. That means what humans can think, what the humans can explore, we are going to implement those things in machine. ठीक, आदमी क्या सोचता है, बंदा क्या सोचता है, उसको हमें मशीन्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना, इन चीजों पर हमें ध्यान देना होता है. ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वर्क्स ऑन दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स, दैट इज रीजनिंग, learning any particular projects, learning any self data learning, we can say, reasoning of those particular learning values, and finally converting them into the self correction. Find these three things. Then this is something regarding history of AI. Actually the father of AI is मुझे एक्सप्लेन नहीं बोलना नहीं आ रहा है, इनका नाम क्या है, जॉन मैकार्थी बोलते होंगे शायद, जॉन मैकार्थी, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया था. And it was first built in 1955. And after that, this the big DARPA, maybe you all are aware of what these things, that what is this DARPA is about. It started in 1956 and it was started while developing till 1974. It's basically DARPA is a conditioning of developed computers solved algebra, word problems, proof theorems, and learn to talk English. This is the way actually the machine learning rise going on. First the machine learning, then AI and science, and finally it has moved on to face recognition. And now it is working on something we are calling as super intelligence and all. This man versus the machine, this was the first example regarding AI, that is Gary Kasparov was defeated. कनिका मैम, यस सर. मैम ये लोग कोई है जो वेटिंग रूम में है? नहीं सर, अब कोई नहीं है. मेरे तो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं सर, लेट मी इन के. मैंने कर लिया, अभी वो कनेक्ट नहीं हो पाया था ना, नेटवर्क इशू. सर मैं आ गया. नहीं नहीं, आपके अलावा भी बहुत क्या है इसलिए. नहीं, अब कोई नहीं है. ठीक ठीक, ओके. Then this was the game we all aware about, that this was the first time a computer won over a reigning world chess champion. Like he is the champion, and this Deep Blue was the actual machine. Fine, and he was that time the champion, and he was defeated by that first Deep versus Blue. Fine, and from there this chess games and all were invented. These are few examples of artificial intelligence. That is, one is Pepper can recognize human face and basic emotions. Then this is that means surgical systems can perform minimal invasive surgeries. And these like in India, I guess Apollo and Kim's hospitals have started this thing regarding this Da Vinci
surgical systems. I'm not fully confirmed, but it was something like those things. And Google Duplex, the most widely used things nowadays, that is regarding AI. Then what can actually AI do? So these superhuman tasks, simply keep in mind these superhuman tasks that are very challenging for humans but easy for machines. Then these are some advantages of the AI, that is error reduction, digital assistance, difficult explorations, medical applications, repetitive jobs, no breaks. Limitations of AI, very challenging to capture all traits of human intelligence, and one biggest trait is that their emotions. Fine, their emotions we can't trait capture very perfectly. Current focus of development lies with lucrative domain specific applications, limited ability with respect to the diversity of domain problems, unpredictability of failure in emergency situations, high cost for R&D and production. Research and development production, fine. These are the three things that we have seen: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. I have not taken reinforcement learning till now, because I have to first cover the topic regarding deep learning and ANN, RNN, and CNN. That's the reason why I have not taken reinforcement learning till now. But it's a basic intro. We'll have one whole session regarding. तो लोग खेल रहे हैं नाना के नानी क्या चलो जाओ चले Supervised, unsupervised reinforcement, we are going to see. Reinforcement, one whole session will take regarding that. Then supervised learning are these two things that we have seen: classification and regression. Regression works on numerical and classification works on categorical. These are some algorithms we have seen: linear regression, logistic, SVM, naive bias, decision trees, LDA algorithm. And unsupervised learning basically works on clustering of all those things. Then that is clustering and association. Then k-means clustering we have seen, hierarchical clustering seen, PCA seen, non-negative matrix factorizing we have not seen those things. Apriori algorithm is something, again, those are things that we are going to see if time going to permits. But I have basically converted the clustering and dimensionality reduction problems. These are only algorithms, not basically used a lot when we are going to work on any projects and all. But yeah, definitely if time exists, we are going to see those things as well. But first, our basic important thing is that we have to convert with ANN, RNN, and CNN. Reinforcement learning. Reinforcement learning means it is going to work on your profit models. फाइन, सिंपल ऐसा होता है कि आप कुछ काम करते हो, ठीक, अगर उसको उसके लिए अगर आपको 500 रुपए मिलते हैं, ठीक, अब उसमें आप कुछ और ऐसा कुछ कर जाते हो जिससे आपको 1000 रुपए मिलते हैं, तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, जो 500 से जो 1000 का जो बीच का जो सफर होता है ना, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। खुद के मिस्टेक्स से सीखना कि हम पहले क्यों 500 कमाए और फिर क्यों 1000 कमाए, तो उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंपल मतलब बताऊं, तो पॉजिटिव मतलब 500 से 1000 का सफर, और नेगेटिव मतलब 1000 से 500 का सफर। कुछ लोग होता है ना कि पहले 1000 मिल गए, वाह 1000 मिल गए तो ठीक है, अगली बार 500 ही मिलेंगे, तो वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सिर्फ समझने के लिए देखेंगे इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, अगर टाइम मिलता हो तो। ये सब कुछ एल्गोरिथम्स है, ये तो आपने कहते हो, इसमें तो बहुत से ऐसे कुछ एल्गोरिथम्स होंगे तो जो मैंने भी खुद ने नहीं सुने हैं, समथिंग लाइक, ये तो नहीं सुना है स्टेट एक्शन, रिवॉर्ड स्टेट एक्शन वाला। इंट्रोडक्टरी पता है, बट पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस मुझे इन सब में से किसी के नहीं आते, एक्सेप्ट क्यू लर्निंग एंड क्यू लैम्डा एंड सारसा लामडा। सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी के इम्प्लीमेंटेशंस मुझे आते हैं काम करने, बट बाकी के मुझे नहीं आते, ठीक। अब रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट फॉर डीप लर्निंग? कुछ ऐसी चीजें थी जो मशीन लर्निंग से नहीं हो रही थी, सम वर देयर दैट वर नॉट हैपनिंग विद मशीन लर्निंग,
and for that purpose only deep learning concept was created. What is this deep learning is all about now? It's a subset of machine learning only. It used to extract useful patterns from a data. You can see an example here. Machine learning model needs human intervention to arrive the optimal outcome. Deep learning model make predictions independent of human interventions. ठीक, इसका क्या मतलब होता है, हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाते रहेंगे इसका हम देखते रहेंगे कि क्या होता है, इसके मतलब क्या थे एंड ऑल। मैं आपको आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू डीप लर्निंग इन थ्री डिफरेंट क्वेश्चनिंग्स, फाइन। एक तो कि क्यों इसका यूज किया गया एंड कहाँ यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले कि वाई, क्यों यूज इसको किया जाता है। व्हेन यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, fine, when you have large amount of data then you have to use the deep learning concepts for more accuracies and purpose and all. When you have some different complex problems na, when some situations like sentimental analysis, we can say it's a branch or we can say it's a topic of an deep learning. Why? Because they are going to see some different deep learning concepts and log, they have some different complex situations and all we are going to see. So for that, then another thing is something regarding future extraction. Future extraction matlab when you have to remove some of the features, that is when you have to work deeply on any particular dependent and independent variables, any particular columns very much deeply, then you have to go on this deep learning. By like some, like if you have some machine learning concepts, if you have a small column they where the range varies from 1 to 5, like it's something like if you have a value of 0.7 you will you can take consider as 1. If you have then a value of 0.3 you can consider as 0. If you have 1.3 consider as 1, 1.8 consider as 2. But in deep learning it's something that you have to work on that particular value. Like if you have 0.7, that you have to take that precise value as 0.7 only. For that purpose only deep learnings are actually used. Okay, future extraction, you can see in this example classification has some only not sorry, machine learning has not that much of classifications as compared to deep learnings and all. And now you can see this is the example AI versus ML versus DL. AI, it's a thing that actually iterate with the human behaviors. Machine learning subset of AI technique which used to statistical methods to enable machines to improve with experience, and deep learnings, it's a subset of machine learning. Fine. It actually works on a neural networks. Another concept is going to create you as an neural networks. Fine. I'll try to explain you this concept somewhat using through an example. Fine. Just a minute. Okay. What is neurons? What do you, have you ever know what is neuron? Can anyone just tell me what is neuron? Neuron सुना है आपने कभी? किसी ने सुना है? न्यूरॉन कहाँ होता है? पैरों में होता है न्यूरॉन? पैरों में होता है या हाथ में होता है? ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस ब्रेन में सिस्टम होता पे है। होता है सर। कहाँ होता है ब्रेन सर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम? अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा। मैं इतना पूछ रहा हूँ पैरों में होता है, हाथों में कहाँ होता है, कहाँ होता है? ब्रेन सर, ब्रेन पे होता है सर। ब्रेन सर पक्का? हाँ यस सर, सर, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं सर, तभी हम लोग सोच पाते हैं। इसीलिए उसको सर कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि शायद हाथ पैरों में भी होते होंगे, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं पता है। हम भी पूछते हैं ना किसी और। क्षितिज सर कहाँ होता है? सर ऐसा लगता है सर पूरी बॉडी में होते हैं सर, मतलब पूरी बॉडी में होता है। यस यस एग्जैक्टली, यस। सर मैसेज ट्रांसफर मेडिकल करने के फील्ड लिए में सर नहीं वही गए, यूज होते हैं सर। हम मेडिकल फील्ड में नहीं गए सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा, हमने कुछ कहा? सर पूरी बॉडी में होता है। पूरी बॉडी में होता है? होना Yes. तो चाहिए सर पूरी बॉडी में सर, तभी सर तो सर। क्योंकि न्यूरॉन से ही हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है। जैसे कि हम हाथ पे टच करते हैं, पैर पे भी कुछ गिरे तो हमें फील होता है, तो न्यूरॉन सर पूरी बॉडी में है। उसे न्यूरॉन्स नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पॉन्स। जो मिलता है ना वो हमें सिर्फ न्यूरॉन्स के थ्रू मिलता है, और जो न्यूरॉन्स होता है ना वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सिर्फ ब्रेन में ही होता है।
बाकी जो हमारे बॉडी में ये सब जो होते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं रेप्लिका कह सकते हैं खाली इस सब चीजों को। ये सर सिर्फ सेंस करता है चीजों को, बस सेंस करके क्या करना होता है वो तो न्यूरॉन्स ही बताता है। यस यस सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है बेसिकली। यस मैम, आप तो बीबीओ वाले हो मैम, आपको भी पता है। थोड़ा बहुत पता है। अच्छा हाँ, यस यस, तो वहीं पर होता है ब्रेन से कनेक्टेड जो चीजें होती है ना, वहीं पर जो होता है न्यूरॉन्स का होता है। तो डीप लर्निंग में भी वही कंसेप्ट होता है समवट रिगार्डिंग न्यूरॉन्स। तो अब ये एएनएन क्या होता है? एएनएन मतलब जो बॉडी में होता है तो उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अब जो चीजें हम आर्टिफिशियली के थ्रू करते हैं ना, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट हम फिर आते हैं, फिर उसके पहले लेकिन हम देखते हैं डीप लर्निंग का जो हम कैसे यूज करना होता है वो। एंड क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ह्यूज डेटा पे काम करता है, देन डीप मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ, तो डीप लर्निंग आर बेसिकली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स, रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ट्रांसलेशन। सब ट्रांसलेशंस होते हैं, ओसीआरस एंड ऑल दोस थिंग्स जो होते हैं ना, उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क्स आपने देख लिया, ये ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, बायोलॉजिकल दिमाग को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, और जो मशीन के साथ करवाते हैं उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का वन ऑफ द मेजर component we can say is that activation function. What is this activation function and all those things? सेम अगेन वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक्टिवेशन फंक्शन के लिए कि अब जैसे आपका कोई हाथ होगा, ठीक, कोई होगा, सॉरी, आपका हाथ है, ठीक। अब आप किसी भी मतलब किसी भी आप गर्म चीज पे आप हाथ रखते हो, ठीक, तो वो कुछ सेंस करता होगा। जैसे आप किसी भी गर्म चीज पर आप पहले जैसे हाथ रखोगे ना, तो कुछ होता नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपकी सेंसिंग जो होती है ना, बढ़ती जाती है। एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी ब्रेन आपको बताती है कि अब आपको हाथ हटा देना, अगर नहीं हटाए तो कांड हो जाएगा, ठीक। ये आपको बताता है। ये क्या कौन बताता है? ये ब्रेन बताता है। अब ये जो बताने वाला जो प्रोसीजर होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन वो होता है, एक्टिवेशन फंक्शन ये आपका नोड होता है, ठीक। नोड, या हम समझ सकते हैं कोई एक प्रॉपर, वी कैन से इट्स एन सेट। फाइन, एक सेट में यू गॉट टू डिफरेंट पॉइंट्स हियर। वन इज समथिंग रिगार्डिंग फंक्शन एंड अनदर इज द सबमिशन वैल्यू। अब सबमिशन वैल्यूज में क्या होता है? डिफरेंट इनपुट्स आते जाते हैं। अब you got different inputs, that is we can say x1, x2, x3, x4, and it has some weight values, weight 1, weight 2, weight 3, weight 4। अब weights क्यों होते हैं? तभी पता चलेगा ना कि आपको हाथ हटाना है कि नहीं। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होगा आपको। अगर सिंपल है कि अगर आप बीमार होते हो, 98 का अगर आपको फीवर होता है, तो क्या आप दवाई लोगे? नहीं लोगे। 99 का लोगे तो आप सोचोगे कि लेना है कि नहीं। लेकिन जैसे 100 101 होता है तो क्या करोगे? आप दवाई लोगे, आपको लेना पड़ेगा। तो वो क्यों लेना पड़ेगा? तो उसकी कोई प्रॉपर वेटेज होती है कि इतना होगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। सिमिलर फैशन में हमारे अब ये सबमिशन करता क्या है? सिंपली क्या करता है? प्रोडक्ट निकालता है सारे वैल्यूज का, x1, x2, x2w2, x3w3, सबका फिर सबमिशन होता है। whatever the submission value will be, it just transfers it to this particular function। ये जो नोड है ना, इस नोड को आपको कंसीडर करना है एज अ न्यूरॉन। एक न्यूरॉन है, न्यूरल में कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स आ रही है। For example, you got a neuron, and in that particular neuron, you got 10 inputs with 10 different weighted values।
you have to first submit some, you have to find out the summation of those all values. You will get a particular value. We can say something like something 50 you are getting as a summation value. Now you have to pass out that summation value to this activation function, which is going to produce the final output. ठीक, अब ये आउटपुट कब जनरेट करेगा, अब ये होता है एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक, इस पे कोई डाउट क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन पर आपको कुछ इनपुट्स आ रही है, उन सारे इनपुट्स को समीशन करते हुए हमें कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ठीक, वो वैल्यू जाएगी हमारी नेक्स्ट पार्ट पर, जिसे हम कहते हैं फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन। उस पर कुछ एक्टिवेशन फंक्शन प्रोडक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ सम का जो आपका क्वेरी होगा उसके हिसाब से वो होगा, एंड फिर उसके हिसाब से फाइनल आपका आउटपुट जो होगा वो जनरेट होता है। यू कैन सी हियर एन एग्जांपल, सिंपल होता है, ये एक एग्जांपल होता है। ये जो हिडन लेयर्स ये सब होते हैं ना, फिर हम बताते हैं क्या होता है। ये आपको देख रहे होगे, ये हमारे कुछ इनपुट्स एंड ऑल थे। इनपुट्स के बेस के अंदर हम वी आर गोइंग टू अप्लाई सम थिंग्स हियर, लाइक सम एक्टिवेशन फंक्शंस, प्रोडक्शन सबमिशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट एन आउटपुट। यही चीजें हम तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में भी करते थे, बट वहां पर तब करते थे जब हमारी डेटा सेट कम होती थी। अब यहाँ पर डेटा सेट ज्यादा है। एंड एक और चीज यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आपको जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग्स करवाते हो ना, ट्रेनिंग्स जो होती है वो यहाँ पर बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, बहुत सारे चीजों का आपको कट ऑफ करके जाना होता है। अब अगर मुझे पास आउट करके मुझे कैट का आउटपुट चाहिए, जैसे सर्कल की बात करता हूँ, सर्कल का मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक, अब सर्कल को मैं अगर सीधा सर्कल ही अगर मैं पास आउट कर दूंगा अगर टेस्ट ट्रेनिंग में, तो ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे ओवल पास आउट करना हो तो कुछ अलग फीचर्स लेने पड़ेंगे, उस पे बहुत से एक्टिवेशन फंक्शंस हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फिर आता है डीप लर्निंग का कंसेप्ट, जिसमें हमारा हिडन लेयर्स एक टॉपिक रह गया। एक मिनट वो भी बता देता हूं मैं अभी। नाउ as we have seen activation function has different types, and what are those types? They have three different types. That is, one is called as linear activation function, heaviside step function, and one is a sigmoid function. When you got like a graph of this and you have an equation as f of w equal to a plus w. Okay, now this a is called your bias factor and this w is called as your weighted value जो हमने ऊपर निकाली थी ना, x1 w1 x2 w2 all submissions, that is called as your w, that is your weighted value, and a is called your simply bias factor. You have a similar in this linear, it's an example of linear function, linear activation function. That's the only criteria of a linear function, that if any particular values are going to satisfy this, then you can suggest it as a linear activation function. But if you have something like an graph as this particular thing, this, and you have an equation as f of w equal to, now you are going to have this two conditions here, 0 1 and 0. 1 when like your w is going to be greater than or equal to your bias factor, and 0 for the remaining cases. Fine, this is the condition. Like whenever your value of your this is called as your heaviside step function. Fine, in this, if your weighted value is going to be greater than bias factor, then you are going to have this value as 1. Otherwise, if the value is equal to a or it is less than a, then you are going to have the 0 value. For suppose, now this a in this case is your threshold value. In this particular case, a is your bias factor, and in this case, a is going to be your threshold value.
like if I am going to say, like here you are going to start with 0 1 and here as a 0, and then we can say here as 1 and 1. It is starting from 0. Whenever you are reached any particular threshold value, till then it is going to be as a 1. Otherwise as soon ये इतना ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से वैल्यू 0 हो जाती है, कम होती है, तो वहां पर आपका ये हेविसाइड स्टेप फंक्शन ज्यादा काम नहीं करेगा. थ्रेशोल्ड वैल्यू जैसे मैं बताऊं कि जैसे मैंने अभी टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, जैसे आपने हाथ रखा है किसी भी वस्तु पर, ठीक, अब पहले तो गर्म नहीं था, पर जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, एक ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी कि जब आपका न्यूरॉन बताएगा कि वो हाथ हटा ले भाई, नहीं तो कल्याण हो जाएगा. तो अब वो जो हटाने वाला जो टाइम होता है ना, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू. अब हेवी साइड फंक्शनैलिटी जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ काम करती है इस 1 एंड 0 पर ही काम करती है. ठीक, उसके बाद एक और फाइनल चीज आती है, वो होती है सिग्मॉइड फंक्शनैलिटी, जो होता है क्लस्टर फॉर्मेशंस एंड ऑल पर. ये बेसिकली आपने चीज देखी है, ये चीज आपने कभी देखी लग रही है आपने, ऐसा कोई ग्राफ देखा है आपने? मे बी आपने शायद क्लस्टरिंग में देखा होगा. क्लस्टरिंग में हम सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करते थे. इट इज एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू माइनस डब्ल्यू. अब ये ई रेस टू ई के पावर में, हाँ, अब ये देख सकते हो, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी, बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू फाइंड आउट द वेटेड ग्राफ, then you have to find out the exponential of this particular values. So it's something very critical, and we can say they are very complex to solve. Okay, and these functions are called as the sigmoid activation functions. One is a linear activation function, one is a heaviside step function, and another is sigmoid function. Fine, we got 3 examples of these activation functionalities. You can see here, this is a simple neural network and this is going to be a deep learning neural networks. हिडन लेयर्स के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कि क्या कंसेप्ट होता है एंड ऑल. इट्स अगेन वी कैन से इट्स सिंपली इट्स अ कांसेप्ट ऑफ न्यूरॉन्स ओनली, बट हाउ मच पासेस इट एक्चुअली टेक्स, दोस आर कॉल्ड एज योर हिडन लेयर्स. कितने टाइम्स एक चीज को आइटरेट करना पड़ रहा है. हिडन लेयर्स आर दोस थिंग्स दैट आर नॉट विजिबल टू यू. जितने ज्यादा हिडन लेयर्स होंगे उतना ज्यादा आपको एक्यूरेसी आएगी. नाउ these are the things that when you have to perform, when you have data size as less and the model performance is more, then you can use the machine learning algorithms, small neural networks, medium neural networks, and the large neural networks. Fine, when you have large values of neural networks, that is a deep learning concept, then you have to use those things. This was an example here, recognizing the cats on YouTube. It was a 70% improvement over any other machine learning techniques at the time. Google Brain team trained its neural network to recognize cats by watching unlabeled images taken from the frames of YouTube. Then it's something like DeepFace, beating humans in Go. AlphaGo algorithm developed by Google DeepMind becomes the first computer program to defeat a human professional. ये गूगल की, हाँ, ये गूगल वाले की है, ठीक, DeepMind का. सेकेंड वर्जन AlphaGo Zero defeated the 18-time world champion Lee Sedol very easily. वो होते हैं, बाप रे. Video games. Then video games also it uses some concept. Self-driving cars. One of the most trending topic of this world is something self-driving cars, that is Tesla. Tesla self-driving car uses a variety of cameras and sensors to perceive its surroundings and move safely with little or no human inputs. Excitement for self-driving, ये आप देख लेना self-driving वाला क्या होता है and all. Self-driving में भी पार्ट है, देखो, conditional automation, high automation, full automation and all those things. Tesla, Nissan, Google Waymo, all those things. Working of self-driving cars, object detections, these are some basic examples. Challenges in self-driving, that are camera problems, illumination. Camera problems नहीं हो तो फिर खेल खत्म है ना, ठोक देंगे. Object appearance का भी वही होगा. Then occlusion, illuminations.
You can see this is an lightning can also lead to false positive object detections. किसी में कुछ दिख रहा है, किसी और में कुछ होगा. 3D objects may change their shape and appearances when in motions. These are some different examples. कैमरा में भी ऐसा होना बहुत ज़रूरी है. Some of the basic applications are we can see as computer visions, machine translations, healthcare, self-driving, gaming, social network filtering, and all those things. So computer vision, these are all just a basic introductory part only. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने जैसा. These are neural networks, challenges in deep learning, effective training the data. Humans can learn from very few examples. Various machines need thousands or millions of examples. ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, ये वो ब्लैक बॉक्स नहीं है, वो साहो वाला. हाँ. देन लार्ज साइज मॉडल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग शॉर्ट टर्म LSTM. रोल ये पढ़ा है आपने? LSTM सुना है आपने? हाँ सर. रोल ऑफ मेमोरीज. देन सेंटिमेंट एनालिसिस. ठीक, ये सेंटिमेंटल एनालिसिस है. So we are going to see sentimental analysis from tomorrow onwards. इनकी होता क्या है, sigmoid functionality, life cycle, ये सिंपल सी ही चीज़ें है. इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, तो ये सब हम कल देख लेंगे कि क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है. एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस कल हम देखेंगे. CNN एंड ऑल दोस थिंग्स कैसे काम होता है ना, वही दिया गया है. अब सेंटिमेंटल एनालिसिस का फर्स्ट ठीक है, खत्म कर देते इसको कैसे होता है कर. ठीक, these are the सेंटिमेंट एनालिसिस. सर मैंने एक सेंटिमेंट एनालिसिस किया था सर, मल्टीनोमियल नाइव बेस्ड एल्गोरिथम यूज करके. किस पे? मल्टीनोमियल नाइव बेस्ड. हाँ. मतलब वो क्या डिटेक्ट करता है? सर वो बेसिकली पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड नेगेटिव सेंटिमेंट को डिटेक्ट करता है, क्लासिफाई करता है. रेडी देखो. हाँ बोले सर फिर से, सॉरी. हाँ सर, वो बेसिकली मल्टीनोमियल नाइव बेस्ड एल्गोरिथम से मैं सर वो पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड नेगेटिव सेंटिमेंट पे सर वो क्लासिफिकेशन करता है. मतलब वही वाला ना, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ आई एम हैप्पी और आई एम नॉट हैप्पी, वही वाला ना? हाँ सर वही वाला. हाँ वो किया था वो वाला भी किया था. हाँ वो कॉन्सेप्ट है. हाँ ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो तो सीधा मेरे को तो देखना पड़ेगा वो एक्चुअली प्रोजेक्ट है कि नहीं मेरे पास अभी. अगर होगा तो हम देख लेंगे. सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में, कि आप मैसेज को मशीन को कुछ मैसेज बताते हो. अब वो मैसेज देखकर वो बताएगा कि आप किस मूड में हो. ठीक, किस मूड में हो वो बताएगा आपको. अगर मैं लिखता हूँ आई एम हैप्पी, तो वो बताएगा कि नहीं सर आप खुश हो अभी. अगर मैं लिखता हूँ आई एम नॉट हैप्पी, तो वो मुझे दिखाना चाहिए कि मैं अभी नेगेटिव मूड में हूँ, मैं अभी कोई पॉजिटिव मूड में नहीं हूँ. कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि मुझे, एक मिनट है, मैंने आज ही डाउनलोड किया था, किसी एक को भेजना था करके, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट. हाँ अरे इसमें आउटपुट है इसमें. ठीक है, मैं इसका ना मैं आपको पीपीटी के साथ एक बार शो कर दूंगा. तो ये बताना होता है. ठीक, अब उसके लिए सब पार्ट्स होते हैं कि क्या करना होता है करके. अब टोकनाइजिंग का मतलब क्या होता है? टोकनाइजिंग मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. टोकनाइजिंग कंसिस्ट्स स्प्लिटिंग द टेक्स्ट इनटू स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू टोकन्स, दैट इज इंटीजर्स. किसी भी पर्टिकुलर उसमें वैल्यूज को कुछ चेंज करना, कुछ भी आप पर्टिकुलर वैल्यूज लेकर. जैसे इन्होंने क्या किया है कि एक सेंटेंस था कि द फूड वाज ऑसम, ये एक सेंटेंस था. अब उन्होंने क्या किया है कि चार चीजें थी सेंटेंस के अंदर, 4 वर्ड को ना अलग अलग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दे डिस्ट्रीब्यूटेड, वन इज द फूड वाज एंड ऑसम. देन दे हैड असाइन्ड सम वैल्यूज, that is 122, 26, 3 and 299. Again they have a lot of working behind it, that how these values actually went on, how they have taken these values and all. Then the second, that was the working of tokenization, converting your string into smallest meaningful units. फिर ऐसा मत करना कि ऐसा नहीं होता कि फिर ध के भी अलग हो, टी एच एंड ई, वो कुछ मीनिंग नहीं बनाता. एक प्रॉपर वर्ड तक ही रखना है. एम्बेडिंग, the embedding layer converts the word tokens into embedding vectors of the specific size. The sequence of n word encodes lot of information that are useful to predict the sentiments. ये चेक करता है कि पर्टिकुलर वर्ड में कौन सा ऐसा वर्ड होगा
जो सिंपली क्लासिफाई, हम जैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेंटिमेंट। जैसे कि अब इस वर्ड में है द फूड वाज ऑसम, इसमें अब दो वर्ड थे जैसे द और वाज। अब क्या ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है किसी भी बंदे का इमोशंस फाइंड करने के लिए? मैं सिंपल इतना बोलूं द फूड वाज ऑसम एंड फूड ऑसम, दोनों ही शायद ऑलमोस्ट एक ही कंडीशन शो करेगी, ठीक। तो हमें वहां पर होता है एम्बेडिंग का मतलब वो होता है कि हमें चीजें वो प्रेडिक्ट करना है जिससे कि सेंटिमेंट्स वो चीजें बता सके। देन कन्वर्सिंग आता है LSTM, passed into the LSTM layers and recurrent and connections to the network to include the information about the sequence of the words in the data. LSTM is just a memory, जिसे हम कह सकते हैं मेमोरी होता है। देन द फाइनल इज द सिग्मॉइड फंक्शनैलिटी, जो हमने ऑलरेडी एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप्स में देखा था कि 1/1 e raised to minus e raised to ev, ये हमें फंक्शन हमें अप्लाई करना होता है। कहाँ पर अप्लाई करना होता है? जहां पर हमने एम्बेडिंग से जो मेमोरी में जो चीजें हैं ना, वहां से हमें उन चीजों को लेकर सॉल्व करना होता है, उस पर हमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना होता है। मैंने बताया था कि हमारे पास वेरियस इनपुट्स होते हैं। जैसे आप सिंपल इतना समझो इसमें कि 122, 26, 3 और 299, 298 हमारे डिफरेंट इनपुट्स है। इन सबका एम्बेशन किया गया, एम्बेड मतलब कि सबका सिंपल भाषा में मैं आपको एग्जांपल के साथ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक। एम्बेड का मतलब होता है कि हमने इन सबका सबमिशन फाइंड आउट किया, फिर हमने उन सबको एक मेमोरी में स्टोर किया एंड वहां से हमने एक एक्टिवेशन फंक्शन में पास आउट किया, जो कि हमें वो चीज आउटपुट शो करेगी, ठीक। ये वही चीज है, हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स थे, उसका हमने सबमिशन किया, उसको हमने एक जगह पर स्टोर किया एंड स्टोर करके हमने उस पर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दी। लीनियर तो लीनियर, हाई फील्ड तो हैवी साइड तो हैवी साइड, सिग्मॉइड तो सिग्मॉइड, फिर फाइनल हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। ये तो हर जगह लाइफ साइकिल वही रहेगा प्रोजेक्ट का, क्या होता है एंड ऑल। देन दिस इज समथिंग रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कलेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। ये मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, सिर्फ आप देखते चले जाइएगा कि क्या होता है एंड ऑल, ठीक। बस उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक। तो कल हम देखेंगे समवॉट रिगार्डिंग CNN, RNN एंड ऑल, ठीक। ओके, आज में किसी को कुछ डाउट? सिंपल, आज तो हमने क्या देखा था, सिर्फ एक चीज बताऊं तो हमने सिर्फ देखा था ANN ही बताओ, न्यूरल नेटवर्क्स ही हमने देखा है आज तो, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट और एक्टिवेशन फंक्शन कि बेसिक डीप लर्निंग काम कैसे करता है कि वो चीज सिर्फ एक इनपुट लेता है, उसमें वो कुछ सबमिशंस करके एक वैल्यू को, उस वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं एंड स्टोर करके उसको हम एक्टिवेशन फंक्शन में पास आउट करते हैं एंड वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो हमें आउटपुट शो करता है। लेकिन डीप लर्निंग कंसेप्ट का यूज क्या था? जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स फेल हो जाते हैं, जब हमें लार्जर डेटा पर काम करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। फाइन, एनी क्वेरीज? आज तो मे भी शायद क्वेरी है, किसी को है क्वेरी? है किसी को आज? नो सर, नो क्वेरी सर। बाकियों को? नो क्वेरी सर, नो डाउट सर। हाँ, पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप पीपीटी सिर्फ एक बार देख जाना। In English, I'll just once try to translate it in English that what we have totally a summary of today's session is that why the concept of deep learning is used, because when you have large amount of data, when you have huge amount of data and when you have complex problems, complex scenarios, then machine learning algorithms can't work. So for that reason only we have used the concept of deep learnings. So what deep learnings actually use, it uses the concept of neurons. Neurons, you know, like if you are neurons, I have taken an example regarding that, it senses the topics regarding your brains and all. What neurons does, it just takes the input values, it will take the input values, then it will have the summation, the first procedure, then it will store the values in a particular LSTM in the memories, and then it will passed out into some functionalities, that is activation function. Either you can go with linear, you can go with heavy side, you can go with the sigmoid functionalities, and after that those functions will going to present out you the outputs.
Okay. कल पे sound. Fine. इतना ही चीज हमने देखी थी. One more thing is something was sentimental analysis. What was the sentimental analysis is all about? Taking your emotions and generating your output, like which mood in you are, whether in you are in a good mood, in you are a positive, negative, whatever the mood in you are, it will just generate that only. ठीक. Yes, sir. Okay. Now, yeah. Okay, fine. So today's session is over now, and yeah, one more thing that the people left out with the GDs. Uh, Anshul sir, Prince sir, Shidit sir, Akansha ma'am, Tuhin sir, Ayushi ma'am, Vikita Ravi ma'am, Gunashekhar sir is left with the सर GD. एक्चुअली सर मुझे एक बात कहनी थी सर, मैं मुझे एक्चुअली सर थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा एक्चुअली सर, हाँ कुछ आप जा काम सकते के हो, जा लिए सर. सकते हो. ओके सर, कैन आई लीव सर? हाँ, लीव. ओके सर, बाय सर, बाय. Bye. Harshita ma'am, then Aniket Meshram sir, have you done your GD? अच्छा, उस दिन उनकी वॉइस का कुछ इश्यू था. भरत वर्मा सर एंड श्री हर्षिता शेट्टी मैम एंड वन मोर इज द गुणशेखर सर. You three are left with your GDs. Yes? Yes, sir. Okay. One more thing is, yeah, if like remaining all, if you have any queries, you can stay, and if you have some work, you can leave the meeting. It's fine now. But you have to say Harshita ma'am, Bharat sir, and remaining, who were there in your team? Remaining, I think Vamshi sir was also there in your team, na? So rest of the two members are not here. Sorry. Rest of the two members are not present for this session. Only Actually, Harshita and Vamshi sir, I already told to him that to be present in the meeting because GD is going to be happen. See, like for certificate purpose, na, you have to at least give any one thing. Either go for GDs or intensive. First of all, both are required. But I guess already Harshita ma'am has told that she has some exams and all. So it's fine, not an issue. That exams are important, I know. But yes, sir. something at least you have to go for one part, either for GD or any projects and all. Okay, sir. We are comfortable with GD, and if time permits, we will do live project also. But we are having examination by the second week of July. Second week of July. Yeah, yes, sir. Okay. Fine. So maybe I guess from 10th or 12th, I guess 10th will be your last date, I guess. I have to And ask like now. lab externals and all the stuff is going from July first, sir. Okay, fine, not an issue. But I'm saying, Yeah. okay, fine. So it's your GD. So what topic you have prepared for? You have to both of all, Gunashekhar sir. Gunashekhar sir, have you done with your GD? यार इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही. Harshita ma'am and Bharat Verma sir, please start off your cameras and start speaking any one of your interested one topic of your GD. Fine, fast, keep. Within 5 to 10 minutes, we'll conclude the thing. So just to start off the proceedings. Which topic you have covered? Yeah, I have covered the first topic, sir. Is AI is important in India. AI is? Important in India. First topic is the first question you gave to us. Okay, fine. So Harshita ma'am, are you fine with that thing? Yes, sir. Okay, please start off your camera also. I cannot start my camera. Can I go with this? Why? It's something like issues. Any issues? Yes, sir. I have an issue. What issue, ma'am? I'm outside my home. I can't start my camera. Okay, fine. Okay, fine. Proceed. Who wants to start? Sir, I will start.
Okay, go on. Uh, AI is a collection of technology that can be used to imitate or even to outperform the task performed by the humans. And the AI is very useful in India so that we can do the more technical stuff like calculating the things and calculating the things and all the stuff which are doing by the humans can be make easily by making the work by using machines. So in India, more than 400 software companies are established on the basis of AI. Because of these companies, all the GDP regarding the technology is improving day by day. As per the records, by the end of the 2025, the major portion of the GDP will be leviated from these AI-based software companies. The entrepreneurship and all the initiative things, innovative things are going to be done in the Make in India program. And if you take about live examples, like India has introduced fast tag policy in national highways so that the traffic may be controlled and the threats from kidnappers and mm, all the security purposes uh, can be resolved by using FASTags. The FASTag technology is mainly used by using AI. When the vehicle is parked over the uh, barricade, the camera detects the number of the vehicle and automatically record the vehicle which vehicle belongs to whom and where it is coming from, so that all the vehicle details will be recorded in the system, so that humans can be automatically detected by looking at it. So like that, many useful things will be going on in India. So it is very useful in India, I think so. Okay. So, like, what if, suppose you are going to be an AI developer in the future? I want to be a data scientist, sir, rather than a developer. Data scientist. Yeah, yeah. Okay, fine. So you have already said like in India, it is going to be beneficial. But can I ask you that among USA and India, which is having an higher AI knowledge? Obviously, yes, sir. Which of the companies that we are building right now in India that Like works on AI? uh, uh, companies, the major companies are not from India. I can tell that products they are developing are using in India rather Which than the of them? companies. Like Fastag is the major example, and Paytm, it gives all the information regarding the vaccinations and all the transaction list to the people. Even Google is hiring a lot of AI operators these days. Like, Yes. Like software engineers, research scientists, data scientists, they are working all on AI jobs. okay, okay. So what's your talk on this thing, ma'am? Um, so I think if AI develops a lot in future, maybe human race humans who are doing AI may be replaced by robots. So in that way, many of may lose their jobs. Okay, yes, definitely. In the last meet, we have discussed like all of the major companies like Infosys, TCS, and all those companies have reduced 3 million jobs. Fine, 3 million jobs they have reduced for an automation purpose. Yeah. And they too maybe in the next upcoming 2 years. So, if we are going to talk about in the era of 2025 to 2030, then how many automations are going to be done? So do you think that AI should be helpful in India for you, not to for an everyone? For you, is AI going to be helpful? As a student, as a future AI developer, I think it won't be because
my job will be at stake. The only problem with the robots right now is they don't have emotion. By 2030, if the developers came with an robot with emotions, then there is a huge chance that many of the jobs are at loss, are at stake, and they might replace that robot. So I don't think so. So for you, if you like, if you're asked that as an AI developer, you are not supposed to be going into that field. Fine. Yeah, I'm talking about near future because my topic is the robot. So in that opinion, I don't think as a student or as a future AI developer. So apart from that, which field you want to be interesting in, apart from AI developer and all? Mm, right now, I'm just thinking about AI developer. That's Okay. Bharat sir, okay, fine. Apart from data scientist, any other thing that you want to be? No, sir. Presently, I'm fully focused on data science because it's a trending course and trending job opportunities are waiting from India. Okay, see, yeah, you have told right that it's a trending topic and all, but one thing, make sure that no one is going to give you a direct job of AI or an ML developer. Fine. Yes, if you have a lot of knowledge, then maybe a chance that you will get. Otherwise, like that too, you have to take a lot of Kegel competitions and all those things. You have to pass out with great aptitudes and all. Then there's some chances of getting directly into an AI and ML developer. First of all, you Yeah. have to be a software developer. First of all, you have to have the ability to create softwares. Okay. You okay, have sir. that ability should work on any frameworks. Fine. Like these, maybe you are aware of this tensor flows and keras. They are all something we can call it as frameworks and all. First you have to build on this, then you can move on for data scientist and all those things. So Bharat sir, you told that you want to be an data scientist. So any projects, did you like any of the projects you have done till now? Yeah, till now I didn't. Yes, sir. I did a project I took an election, like election surveys are going to held in like consensus, no, sir. Like election list will be released by election commission. Like whoever is eligible for the voting purpose. So, like surveys are being held in constituencies. Mm-hmm. So, by the list released by the election commission, I got a sample of those lists, and by using the data science, I removed all the junk and which are particular numbers, which age is eligible for voting, and who are the old people, who are the young people, who are educated. Like that, we can divide by using the data science algorithms. So I made a project like that. So it's just for a like practice purpose. I did not a overall project I didn't do on data You are science. in third year right now. Yes, sir. Yes, sir. I am incredible. So like completing your third year Yes, sir. By this July, I will complete my third year. by July. Okay, so the after this upcoming exams. Yeah, yes, sir. So, like, if you're like Harshita ma'am and you both are of same college, na? Yes, Yes, sir. sir. We belong to same college but different sections. But different, Sections. same branch, na? Yeah, same Same branch. branch but different sections. Okay. Sugar, udhar na sugar. Chal. What was your third year project? Yeah, we don't have year-wise projects, sir. We have only One project. two project, one minor project and One major project. Overall BTech. which we have Okay, to so submit you in fourth year. huh? Which we have to submit in fourth year. Both minor and major, both. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 4-1 Okay, we'll okay. do 4-1 minor, and 4-2 it will be major. Okay, fine. So maybe like you are not aware of any projects right now regarding data science, ML, and AI. Fine. Yes, sir.
Okay. Any thoughts you have thought regarding Harshita ma'am? Just like Bharat sir has told something regarding elections and all. You have any thought regarding any like any queries and all? No, sir. Okay, fine. Okay, fine. So just tell Vamshi sir to contact me once. And another Sure, one, sir. who was in your team? Mansa ma'am. Mansa and someone called Sadanand. Okay, fine. You have not discussed anything with them, Sadanand and Mansa ma'am, Sadanand sir and Mansa ma'am. No, sir. So we are not the contact. We have our own. We chose our own topics by our own, sir. We didn't discuss in the group. Like we should select the particular topic. Mm, okay, fine. Okay, fine. So thank you so much. You can start leaving the meet now. Thank you so much. Thank you, sir. Sir, hello, sir. Yes, sir. Is it, Gumshekar sir. sir? Actually, I don't know my teammates and all. They didn't contacted me. I don't know. Sir, who is my teammates and I don't know. Actually, I have to again see this whole topic because again, like if only you only left or something like your happened and all, I don't know. I have to go through once the meeting and all. Not an issue. The okay. next week is going to be the final Saturday, I guess. So Uh, there will this will conclude all those things. Fine. yeah, okay, sir. Okay. Okay, not an issue. If you have not completed with their GD, try to submit a small project with your team members. Actually, I don't know my team members, sir. I'll If share I with you. know Fine. them, I'll share with you your team lists and all. yeah. Thank you, sir. Thank you. Harshita ma'am, Bharat sir, yes, I know that you have exams and all, but at least try to do something in the project related. Fine, because if you are getting an internship certificate and if you have not submitted any project and all, so it might happen that some issues may possible, but just try to do. Fine. Okay, sir. Yes, sir, we'll try, sir. At least try, even just at least take a small topic and try to just at least complete one or two steps in that. Not saying you to complete the project, but at least start those things. Okay, Yes, sir. sir. Okay. In the Any problem with any our small colleges is in the uh, problem with our college, we can complete our life work, but the problem with our college is the schedule will be released before the before a week before a examination, sir. no, no, no. Okay, So fine. See, you have yeah, to focus on your exams only because those are really important. As we can skip those things, but at least you have to start those things. At least if my seniors are going to ask that what they have done, so at least I should show them that sir they have done these things, but due to they have exams and all, they are not able to complete these things and all. Fine. yeah, okay, sir. Huh. Okay, sir. Yeah. Sir, hello. Yes, sir. Sir, what does project look like? Is that only presentation or something we have to do? Like what we have to do on project, sir? Like project, like any analysis you can do, like you can take any one topic like regarding linear regression, you can do some work on that, any logistic regression, any CNN work and all those things, any circle square classification, dog cat classifications, cluster Yeah. formations, any simple project, not an issue. Yes, Actually sir. wanted to go for an individual purpose only, but individually you can take simple examples, but if you are going to want for an like a teamwork, then you have to take a bigger task. Fine. Yeah, Okay. okay, sir. Sir, Not we an, have to present any documentation or something like yeah, that. those things I will tell you on the Monday evening. Monday is very important. I don't know why the people, like I got to 30 to 32 peoples were there till tomorrow, I guess, but today only we got only 16 members only. I don't know why, but maybe Saturday is something like that. I'll have to take a meeting on Monday and I have to discuss all those things that regarding project submissions and all those things. Yeah, okay, sir. Thank you. The final concluding session also I don't know because I'm very weak at maths, because you have started from 26 or 27, 28. 25th, I guess. 25th you have started. Yes, sir. So okay, so 25th, that means on and how many days are there in June? 30 or 31? 30. 30. Okay, in June 30 days, so 35, 35. So maybe July 10 is going to be your end date. Fine. Okay, sir.
No. If something like July, from July 25 you have started. Oh, sorry, from May 25 you have started. Then July 10 will be your end date. That is maybe whichever the final days will be, like 9th and 10th. At those 2 days you have to submit your whole things. Like you will have your mock interviews. You will have to submit your projects and all submissions, and all those things will be done on those days. Fine. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, and Harshita ma'am and Bharat sir, you got your marks regarding that gradings and all? Yes, sir. Yes, sir. I got. You got. Prince sir, you got? Yes, sir. Payal ma'am? नहीं है, मीटिंग में नहीं है. Yes, sir. मिले. Gunshekar sir, you got? No, I think so. I guess no. Okay, fine. Harshita ma'am and Bharat sir, please stay in the meet. Remaining 3 you can leave out the meetings. Harshita ma'am and Bharat sir, please you also leave out the meetings. I'll contact you personally. Okay, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Tata. See you. Keep smiling. All bye.